in that portions of November, what we dedicate as World Diabetes Day. And as Dr. Khatija just mentioned, the idea is to highlight the importance of diabetes, the importance of preventing diabetes, and if somebody is a diabetic, to prevent complications by good metabolic control. And I think very elegantly Khatija highlighted the importance of lifestyle improvement, whether it is diet or exercise or combined together. You can prevent many of my studies that I did in Pakistan, DPP program Pakistan and Group Park program, two studies that conducted and published, that 65% of the diabetes you can prevent. अगर आपके माँ बाप को शुगर है तो आपको चांस बहुत ज़्यादा है शुगर में। और पाकिस्तान की जीन्स ही कुछ ऐसी हैं, खासकर म्यूटेशंस हैं 3 जो हमने डिस्क्राइब की, अगर वो म्यूटेशंस आप कैरी करते हैं और वो हमारी 90% पॉपुलेशन कैरी करती है, तो वी इन एनी केस बाय डेफिनेशन आर प्री डायबिटिक्स, एंड दैट मीन्स कि हमारे लिए इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव टू प्रिवेंट डायबिटीज़, क्योंकि हम प्री डिस्पोज हैं टू डायबिटीज़ जस्ट बीइंग पाकिस्तानी। और उसका यही तरीका है कि अपना वेट लॉस और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करें। तो और कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं कि जो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करती हैं, वो अगर उस वक्त आप लें जब आपको डायबिटीज़ नहीं हुई, तकरीबन 65% आपका चांस कम हो जाता है। ये देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज जो आज क्योंकि खतीजा ने मुझे कहा एक वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने का, एंड दैट इज इट टाइम टू से गुड बाय टू इंसुलिन? आर वी नियरिंग द एंड ऑफ इंसुलिन एरा? Obviously, this talk I dedicate to all my diabetics around the world, which are in millions and millions and billions now. So we will talk about it. That will it happen? I personally think we are already starting to say goodbye to this wonder drug, wonder chemical, insulin, which saved so many lives, which did so much good to the mankind, and I think in about the next couple of decades, in type 2 diabetics, जो कि हमारी 95% लोग type 2 diabetics in Pakistan में, there will be no insulin required for them. And also, I think later on in about 30 years, even type 1 diabetics will need insulin therapy. And ये मेरा ख्याल ही था, लेकिन और ये मेरा ख्याल पिछले कोई 5 साल से था, लेकिन अब जो मेजर इंसुलिन प्रोड्यूसर्स हैं 5 दुनिया के, उन्होंने भी अपने सारे बिजनेस प्लान रिवाइज कर दिए। और मेरा ख्याल है कि आफ्टर अबाउट 9 years Novo Nordisk will stop producing insulin, and 11 years Eli Lilly and so on. So let's look at इंसुलिन की जर्नी है क्या, जिसके हम इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं। 1920 में टाइप 1 डायबिटीज़ वाज लाइक ए कैंसर. इट वाज a death sentence to the child, and child would not live beyond few months or years. और ये लियोनार्ड थॉम्सन है, और ये बच्चे को जब इंसुलिन नहीं लगी, ये अपनी माँ की गोद में, और जब लगी, और ये 14 नवंबर 2022 को लगी, 1922 को लगी, तो आप देखें कि 100 साल हो गया है इसको। और ये उसको मिरेकल केमिकल कहा जाता था, मिरेकल पेप्टाइड कहा जाता था। सो द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन वाज, आई थिंक safely we can say, it was a landmark discovery of the last century, and also it saved so many lives. When we never had insulin, the average life expectancy in the world was 54 years, but in diabetics it was less than 11 years. Then the 1922, when the insulin
was discovered, and we started using insulin, first in Leonard Thompson and then so many other people. Average life expectancy at that time had increased to 66 years, and the diabetics were enjoying life expectancy of 45 years from 11 years. And then the current life expectancy is 81 years of the world average, and the diabetics live about 70 years. But still, there are loads of unmet needs in diabetes, and there is no cure as yet. As you can see, each advancement brought in one way or the other, it overcame many limitations. सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि हम इतनी वॉल्यूम बना नहीं सक रहे थे एनिमल इंसुलिन की, because we were dependent on the taking out pancreas of the pigs or of the sheep or of the goats or buffaloes, and the availability. So scalability became easy when recombinant DNA technology was used, which is not only being used for insulin, and me and my group cloned insulin in Pakistan a long time ago, and it's very easy now using a bacteria, E. coli or a yeast cell, and feeding them amino acid in a certain sequencing, and they make the insulin for you. So the scalability became a history. And then obviously the modern insulins, इंसुलिन से ह्यूमन इंसुलिन बाद में बनी और फिर एनालॉग्स बने. जब एनालॉग बने तो me and my group was the first one, probably one of the first ones in the world to test it against human insulin. और फिर हमें पता चला they are much more physiological. They brought that flexibility in life. We conducted this trial in 1993 on Ramadan, when we used Humalog, which was the first analog. Analogs को इस तरह बनाया गया कि अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंसिंग है थोड़ी सी बदल गई A चेन और B चेन में, थोड़े से अमाइनो एसिड की वैलिन की जगह आइसोल्यूसिन कर दी, तो एकदम इट बिकेम मोर फिजियोलॉजिकल से नीडल टू मील टाइम खत्म हो गया. आपको पहले इंसुलिन लगा के फिर वेट नहीं करना पड़ता, उसी वक्त खाना खा के या खाना खाने के बाद, और फिर हाइपोग्लाइसीमियाज कम हुए, एंड दैट इज व्हाट वी शोड इन रमजान, very famous Ramadan studies that we published in diabetology and many other journals. Weight gain is always a problem with insulin, and the analogs have lesser weight gain in our studies, and also, as I said, the hypoglycemia, convenience and simplicity came in. People with diabetics, however, continue to have the stigma. उस वक्त, at that time when the इंसुलिन वॉज इन्वेंटेड एंड आफ्टरवर्ड, जब बच्चे इन्वेंट करते थे वो समझते थे कि ये एडिक्ट हैं, पता नहीं क्या लगा रही हैं, नशेई हैं, तो देयर वाज अ स्टिग्मा एसोसिएटेड. अराउंड 2 to 4 times higher chance of hypoglycemia. 83% of the people also had other issues with that. 50% people also had problems with weight gain and hypoglycemia, and also the complexity के इंसुलिन को कैसे रखना है, कैसे लगाना है, that became a problem. Despite all the advances that I said, that we have basal analogs now, which do not have peak to trough ratio at all, they are very flat response. We have conducted number of studies on the basal analogs, and we also cloned one basal analog called Parkins. So common to the hypoglycemia, low, जब blood sugar किसी की low हो जाती है, obviously it's a nightmare for that patient and for the family. तो type 1 diabetics में you can see कि 3 से 7 events होते हैं per month, और जो type 2 जो हमारे ज़्यादा कॉमन है, 1 से 4 इवेंट्स उनको होते हैं हर महीने. अगर आप 3 महीने का देखें तो 68%, यानी कि 68% बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और 19% टाइप 2 डायबिटिक्स को होता है, और इवन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉमन. एंड सीवियर जब
शुगर लो होती है वो तो खैर एक जब फॉरन डायग्नोज हो जाए, फॉरन लंप ऑफ शुगर दें, सही हो जाए, लेकिन अगर सीवियर हो जाए तो उसमें कॉग्निटिव डिसफंक्शन की बड़ी प्रॉब्लम है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की बहुत प्रॉब्लम है। और अगर आपको रिपीटेड हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं खासकर बच्चों को और स्लीप टाइम पे होते हैं तो दे आर वेरी अलार्मिंग, क्योंकि उससे ये होता है कि जो आपका नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है आप अवेयर ही नहीं हो सकते। सो इट ब्लंट्स दैट ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया इफ यू आर हैविंग hypoglycemia every now and then. So the approaching hypoglycemia to sense the ability to sense the approaching hypoglycemia. Another problem is weight gain. This is a barrier to insulin or weight itself. Increasing weight is a risk factor. एक तरफ शुगर है, एक तरफ आप शुगर को सही कर लेते हैं, मेटाबॉलिक कंट्रोल सही कर लेते हैं, HbA1c सही हो गई, लेकिन वेट गेन हो गया, तो these are again this is counterproductive. So weight gain का जो problem है ये medication adherence, patients do not like to gain the weight, और इसलिए उनको भी पता है कि ये रिस्क फैक्टर है एक हार्ट डिजीज़ का और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स वगैरह का, तो इसलिए वो, और फिर साइकोलॉजिकल वेल बीइंग भी उनकी देखा गया है कि जब वेट गेन होता है तो वो कम हो जाती है, तो उनकी एडियरेंस कम हो जाती है। तो करंट सिनेरियो ऑलरेडी खतीजा वेरी एलिगेंटली शोड यू दिस। मीना रीजन जहाँ पे हम रह रहे हैं, वी आर गोइंग टू रजिस्टर द हाईएस्ट इंक्रीज इन डायबिटीज। Unfortunately, in about 23 years, the diabetes prevalence is going to double in Pakistan. Already, unfortunately, it is very, very high. When you look at Pakistan, you can see that we have 32 million diabetics, which is going to increase just in few years to about 60 million. And अब 6 करोड़ लोगों को जब डायबिटीज़ होगी तो कितना रीनल फेलियर होगा और कितनी हाई डिजीज होगी। एंड प्री डायबिटीज़, जैसे उसने कहा, there is a huge pre-diabetics living there, और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी 40 to 50% डायबिटीज़ इज अनडायग्नोज। डायग्नोज उस वक्त होती है जब गुर्दे फेलियर के साथ मरीज आता है, फालिज के साथ या हार्ट अटैक के साथ, पता लगता है कि जी शुगर है, HbA1c करते हैं वो 9 होती है, दैट मीन कि कम अज़ कम 3 महीने से जो शुगर उनको चल रही थी। सो व्हाट आर द अनमेट नीड्स इन डायबिटीज़? मरीजों के बहुत कंसर्न हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एड्रेस दिस कंसर्न कि कॉस्ट कहाँ से आएगी। सबसे पहली चीज़ है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे डायबिटीज़ की मैनेजमेंट का, ट्रीटमेंट का, और उसके चेकिंग का, उसके होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग का। डायबिटिक मेडिकेशन, मेरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, मुझे हाइपोग्लाइसीमियाज होंगे, ब्लड शुगर लो होगी, दैट इज़ द मेन कंसर्न। वेट गेन होगा, डोजेस कितनी लेनी पड़ेगी, मैं अपनी जो लाइफ स्टाइल पूरी मेरी शिफ्ट हो जाएगी, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, और डाइट भी मुझे लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी। तो दीज आर वेरी जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ पेशेंट्स दैट आर सीन। सो द बैरियर्स टू सक्सेसफुल ट्रीटमेंट बाय इंसुलिन थेरेपी इज कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी कोल्ड चेन, उसका सारा कुछ उसको कैरी करना सफ़र में, दीज आर ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम पे लगाना, खाने से पहले लगाना, एनालॉग्स तो लग सकते हैं लेकिन दे आर मोर एक्सपेंसिव। सो ह्यूमन इंसुलिन हैज़ टू बी इंजेक्टेड अबाउट 45 मिनट्स। 45 मिनट्स आपने लगा लिए, अगर रमज़ान आ रहा है, यू कांट वेट 45 मिनट्स, और फिर ये बहुत मसला होता है उसमें। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ ह्यूज कंसर्न, और हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा होगा और ये कॉम्प्लेक्सिटी, तो एडिहेरेंस कम होगी। Hypoglycemia is a 24-hour concern and impacts all aspects of life. 75% जो मरीज़ हैं उनकी नींद अगले दिन नहीं आती टेंशन की वजह से कि मुझे नींद में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो जाए। 64% जो फैमिलीज़ हैं वो रिक्रिएशन पे नहीं जाती, पिकनिक पे नहीं बच्चे को ले जाती कि इसको वहाँ पे शुगर लो होगी तो क्या करेंगे, और स्टिग्मेटाइज बच्चा होता है स्कूलों में, बिकॉज यू कैनॉट गो विदाउट एनी मेडिकल पर्सन ट्रैवलिंग विद देम। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है कि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमियाज होते हैं और आपको फिर डिप्रेशन, डिमेंशिया के चांस भी बढ़ जाते हैं, अबाउट 3 गुना बढ़ जाते हैं।
लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी एट वर्क इज़ इम्पेयर्ड, कि आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, आपने जो सीखना था काम पे, वो आपके डेज ऑफ भी बढ़ जाते हैं, तकरीबन 6 to 7 डेज ऑफ रहते हैं. Insulin we know is not appropriate in any case for many people, especially with obese people, because they will become more obese when you give them insulin. Elderly और obese इसलिए भी obese हो जाते हैं, वो कहते हैं भूख तो ज़्यादा लगती है, satiety inhibiting peptide because brain में जाके satiety signaling को रोकती है. लेकिन ऑल्सो मरीज़ अपने आप को डंप करते हैं कि मेरा शुगर ना लो हो गया, उनको पैनिक होता है, इसलिए खाते रहते हैं, तो वो वज़न बढ़ जाता है. एल्डरली पीपल में सेफ्टी इश्यूज हैं, उनके गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाएगा नेक ऑफ फीमर और उधर से मोर्टेलिटी हो जाएगी, इसलिए वी थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देम, विच शुड बी ट्राई टू कीप अवे. और फिज़िकल और मेंटल कंडीशन, अगर स्पेशल चिल्ड्रन हैं या कोई और हैं तो उनके साथ भी बड़ा मसला होता है इंसुलिन का. Times are changing, and we are going to listen to Professor Prof, who is a very good bariatric surgeon. That lifestyle is changing. We are recommending bariatric surgery at much earlier level rather than morbid obesity only. Diet